Hi everyone. I'm making this video to share my interview experience of particularly FMS, and we will continue this series. तो ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू नो द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, द इंटरव्यू फील्ड्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. So I will be doing for all the colleges, all the IIMs, all the non-IIMs. So this will be the most genuine review because I have personally gone through the process. So my interview was on 19th of the April, है ना. तो प्री इंटरव्यू थोड़ा मैं बता देता हूँ. यू जस्ट नीड टू कैरी द photocopies and the originals of the 10th 12th graduation and the work ex and the caste certificate or the PWD certificate if that's applicable. तो प्री इंटरव्यू ऐसा था यार कि so we have been as the aspirants we have been going through a lot of interviews, mock interviews, and FMS generally releases its shortlist in the starting of the April. ठीक है. तो इसके फॉर्म फिलिंग हो जाती है जैन स्टार्ट में. इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है या मिड दिसंबर में, इवन बिफोर द कैट स्कोर हो जाती है. एंड फॉर्म सब बच्चे फिल कर सकते हैं. द फॉर्म फी इज ₹1000 एंड फॉर्म फिलिंग के बाद यू हैव टू वेट. एक फाइनल लिस्ट आती है जहां पे आपका नाम होता है. यू हैव टू चेक योर नेम एंड योर इंटरव्यू शेड्यूल. जिसका नाम नहीं होता दैट मीन्स दे आर नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ. फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है. उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट है वो एफएमएस अपने हिसाब से देता है. और एफएमएस शॉर्टलिस्ट देने के बाद 4 दिन में इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है. बहुत फास्ट पेस इंटरव्यू होते हैं. तो ये सब चीजें मुझे ऑलरेडी पता थी, तो इसलिए आई डिडंट फोकस टू मच ऑन द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. और with 2 to 3 months of the preparation, you kind of know how to answer the new questions or the new things. And the FMS is famous for asking some random questions, I would say, or some the unexpected questions. मतलब कुछ भी पूछ सकता है. And you have to be very aware. Like मेरे एक स्लॉट में बंदा था, उसको एक पोइम लिखने को बोला and he was not able to write the poem. दो ऐसा हो सकता है कि आपको पोइम कुछ एट द मोमेंट याद ना आए, बट एटलीस्ट कुछ ट्राई करो कि कुछ लिख पाओ वहां पे. ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट शोइंग योर लाइक वीक पॉइंट टू द पैनलिस्ट. ऐसा नहीं करना वहां पे. तो जिनका भी अभी एफएमएस किसी भी साल में है, तो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स. और वहां पे एक एक्सटेम्परी टॉपिक देते हैं. दे डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक. तो दैट इज द अनदर थिंग. तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा. यू विल हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. सो दिस दैट वन इज द वन पार्ट. अब नेक्स्ट बात करते हैं. तो वहां पे माय रिपोर्टिंग टाइम वाज 10 AM एंड आई रिपोर्टेड देयर 10 AM. देन आई हैड टू वेट फॉर like 1 hour to get my documents verification done. And after the doc verification done, I was told about my slot, about the expected time. So I was kind of entered the interview room at the 12:30. So there were 4 panelists. When I entered the room, I greeted all of them and I was the last in my panel. So they kind of कि जैसे मैं एंटर हुआ तो they were like saying those words which can shake you, which can shake your confidence and which may make you nervous. So वो सब ऑलरेडी मैंने देखा हुआ था काफी. तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि वो कुछ कर रहे हैं या क्या. मुझे पता था कि दैट वाज जस्ट वन ट्रिक बाय द साइड. तो जब मुझे देखा मैं समझ गया उनका कि वो सॉर्ट ऑफ प्ले करना चाह रहे हैं मेरे साथ. तो
तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं वो मेरे साथ सॉर्ट ऑफ जानबूझ के कर रहे हैं चीजें, और वो बहुत लोगों के साथ ऑलरेडी कर रहे थे। तो आपको ये चीजें जब पहले पता होंगी तो you kind of aware about the things and you then know how to better handle all those things. ठीक है, तो there were 4 people in my panel. 2 males were there, 2 females were there, and one male, one female is in kind of 40s, and the other was in kind of 50s. तो कुछ young थे, and the other one was like decent enough. ठीक है, तो जैसे मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, तो द हिंदू कॉलेज एंड द एफएमएस कॉलेज हैज ए वेरी नियर बाय डिस्टेंस, और आई वुड से कि उनका जो बीच में जो वॉल है वो भी शेयर होती है, तो इतना पास है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एज एक्सपेक्टेड कि यू आर फ्रॉम हिंदू कॉलेज, उन्होंने इतना ही बोला. एंड देन आई केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग कि यस आई एम फ्रॉम हिंदू कॉलेज एंड हिंदू कॉलेज इज क्वाइट नियर, एक गली छोड़ के मेरा कॉलेज है. तो आई एक्सप्लेन्ड इट ऑल. ठीक है, तो देन द पैनलिस्ट आस्क्ड कि सो यू गॉट द मोटिवेशन टू डू एमबीए from FMS by looking at it. So I was like, nahi, I have to redefine all the things, because MBA is not just like tumne college dekha and you start dreaming about it. I was like, I had this ambition, I had this goal of doing MBA or pursuing more knowledge about the management since my early classes. And then I got to know about the FMS also, and then I got a chance to revisit the college, to see the college every time, and that kind of give me motivation also. So ऐसा मैंने कुछ किया, and then they shifted to the extempore round. So the extempore round was given by the panel is business cycles and the life cycles. So business cycles and life cycles में भी तुम्हें नहीं पता हो, but being from the economic background तो मुझे काफी idea था. And as soon as they gave the topic, I started speaking it, but then they interrupted me कि आप पहले सोचो फिर बोलो. And then I again started it as soon as they ended, but still they again interrupted me कि उन्होंने बोला कि आप एक बार 10 सेकंड सोचो. So then I took 4 to 5 seconds to think, and then I started. तो मैंने ऐसा बोला था कि यार business cycles different types के होते हैं. Sometimes you have expansionary phase, sometimes you have contractionary phase, and sometimes you have recessionary trough. So like the business cycles, we have life cycles also, where the expansionary, contractionary, recessionary, all the phases come, and we have to face all the scenarios. But the thing is that the business cycles involves economics and quantitative aptitude, but the life cycles are sort of more judgmental type, because it depends on how you perceive the life, how you make out of the situation. For example, if there are 2 candidates who are rejected by some college, so the phase for one might be the expansionary, and for the other it might be contractionary. So I kept on, and they then stopped me कि it's okay. ठीक है, then the one of the panelists jumped to my work ex. तो उसने पूछा कि आपने वर्क एक्स कहाँ किया है, तो आई डिफाइंड कि मैंने वर्क एक्स आईसीआईसीआई में किया है. एंड then she started going through my form or the SOP, जो तुम्हें ऑलरेडी फॉर्म सबमिटिंग के ऑनलाइन टाइम सबमिट कराना होता है. तो वहां पे काफी कुछ मेंशन होता है. तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर द एचएनआई कस्टमर. सो देन आई एक्सप्लेन कि एचएनआई कस्टमर्स क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, हाउ यू कैन बी द वन, हाउ आईसीआईसी डिसाइड्स वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट. तो ये सब एक्सप्लेन किया. एंड देन शी सेड व्हाट आर द एनआरआईज. तो देन आई एक्सप्लेन व्हाट आर द एनआरआईज, एंड बस उसमें इतना ही एक्सप्लेन किया. दो आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि हाउ एनआरआईज डील विद आईसीआईसी बैंक, एंड दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, बट उन्होंने नहीं पूछा. तो आई काइंड ऑफ, मतलब इंटरव्यू में द वन टिप इज कि आपको ज्यादा भी नहीं बोलना है और आपको कम भी नहीं बोलना है. समटाइम्स द इंटरव्यूअर इज सॉर्ट ऑफ a less speaking person, I would say, or something, he or she doesn't want to speak more. So us time you have to take the initiative, you have to explain the things. And in most of the in 99% scenarios, the image that is formed by that behavior seems quite good. And then she asked me what are the overseas citizens. So overseas citizens was a kind of like off the track thing for me, और मुझे नहीं पता था. तो I was like, मैम मुझे नहीं पता ये चीज, and I don't know and I'm not sure about it. So she herself explained about the overseas citizen.
तो देन आई कंटिन्यूड विद हर वर्ड्स, तो मैंने भी उसको एक्सप्लेन किया, एंड देन आई पुट आउट द डिफरेंस बिटवीन द HNI वर्सेज NRI versus the overseas citizens, and then I ended with a note. Though I have explained what are the NRIs and overseas citizens, but I'm not very sure about the overseas citizen part. So that cover up your dilemma or your confusion. Like I would always prefer to not being sure in the wrong case rather than proving myself right on the wrong things. So अगर कुछ नहीं पता तो please accept in the interviews, and interviews are also the person वो आपका जैसे I have been teaching you from last like 1 year 1.5 years, so you might have some judgment about me. तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरी एक वीडियो पे देख के कुछ जज कर लिया, तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस इन द इंटरव्यू ऑल्सो। पहले 3-4 मिनट में वो कुछ जजमेंट बनने लगती है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन जजमेंट। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट कम होती है, दो होती है, बट अब ऐसा है मान लो आपको यही नहीं पता कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो दैट दैट थिंग माइट बी सम काइंड ऑफ लाइक ऑफ द ट्रैक पॉइंट, है ना। तो वैसी चीज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनरली जो नहीं आता तो नहीं आता, है ना। तो गलत मत बोलना, इंटरव्यूअर्स काफी स्मार्ट होते हैं। लाइक इफ यू आर सेइंग रॉन्ग एंड दे विल keep nodding and they will keep trying that you are right, and in the on the result they will reject you। तो ऐसा भी होता है। देन वन ऑफ द पैनलिस्ट शिफ्टेड टू द माय यूट्यूब चैनल, उन्होंने पूछा कि आप यूट्यूब पे क्या करते हो, एज यू हैव मेंशन दैट यू आर कंटेंट क्रिएटर। सो आई एक्सप्लेन्ड कि मैं क्या बनाता हूँ, किस टाइप का कंटेंट रहता है, व्हाट इज माय यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग एंड हाउ इट शेप्ड मी। तो काफी कुछ एक्सप्लेन किया, एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग थ्रू माय कैट स्कोर कार्ड। बिकॉज एफएमएस के इंटरव्यूज इतने फास्ट होते हैं, तो बिफोर एंटरिंग द रूम दे डोंट चेक द प्रोफाइल, है ना। तो बिफोर एंटरिंग द रूम नहीं होता प्रोफाइल वगैरह कुछ भी चेक, सो जनरली बाद में ही होता है ना। तो जब उन्होंने मेरा प्रोफाइल चेक किया, सो द सर वाज अमेज्ड टू नो दैट आई हैव जस्ट 48 परसेंटाइल इन द स्कोर कार्ड। सो द होल पैनल वाज लाइक शॉक्ड टू नो कि एक बंदा जिसके खुद 48 परसेंटाइल आए हैं कैट में, वो आपको पढ़ा रहा है। सो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू मेंशन वन थिंग कि मेरे से पहले सभी कैंडिडेट्स एसटी थे, सो इट माइट देयर इज स्लाइट चांस कि उनका ऐसा परसेंटाइल हो। तो द पैनल काइंड ऑफ थॉट कि नेक्स्ट कैंडिडेट सिमिलर प्रोफाइल का है, तो ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट्स। तो उन्होंने जैसा बोला, तो एंड दैट वाज लाइक देयर नेचुरल रिएक्शन। वो पता लग जाता है कि एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू प्ले और दे वर बिहेविंग नेचुरली। सो थोड़ा नेचुरल था उनके एंड से। तो आई करेक्टेड, एंड देन ही सेड कि एक्सप्लेन करो इसको कि तुम्हारे 48 परसेंटाइल, एंड देन आई एक्सप्लेन्ड कि सर द 48 इज द स्केल स्कोर एंड द 99.93 is the percentile that I received in the quants, and then one of the other panelists said to explain it. Then I further explained it, like what is row score, what is scaled score, what is the percentile, and how the normalization works. So I had to explain it all, and I did. Then I was cut out in between. So the and after a moment the sir itself realized कि थोड़ा mistake हो गया, and he kind of like accepted it। Then the few of the last question was tell one difference between oligopoly and monopolistic competition. So the ma'am asked for the one difference, and I told it about the number of customers, about the number of firms in the oligopoly and the monopolistic competitions. And then they asked me like, what all calls do you have? So I mentioned that I have calls from all the 20 IMs, the auxiliary, MDI, FMS, SPGen. And then she was like, the panel was like, okay, thank you, we are done। So this is the interview experience of me, and I have shared it on the Quora in the text format also। So if you want to visit, you can visit my Quora, just put the PALLAV GOYAL and you will get to know। So some amazing gyan, just wait a minute।
हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एफएमएस का बेसिकली मतलब इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ यही था। एंड बेसिकली फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जिसको भी एफएमएस का कॉल है या हाँ, तो मुझे एफएमएस के बारे में या बाकी इंटरव्यूज के बारे में जो जिनका भी अभी इंटरव्यूज पेंडिंग है अपकमिंग, है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रोफाइल मैप बनाएं। प्रोफाइल मैप बेसिकली टेल्स यू हु हु इज यू, योर नेम, योर सिटी, हिस्ट्री ऑफ द सिटी, हिस्ट्री ऑफ द नेम, फेमस पर्सनैलिटीज, योर कॉलेज, योर स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम है तो वो वाई दैट नेम, then college, what you did in college, what are the academic achievements, non-academic achievement, extracurricular, co-curricular activities, detail about all the co-curricular activities, why, what, how, when, what is the impact, everything, why MBA, in which field, what is your long-term career goal, short-term career goal, ठीक है। तो these are some of the basic questions. You have to be very very strong at the current affairs, right? Current affairs may you should be good static GK of your state, of your nation, of the worldwide overall. Like you should at least know where is WHO, what is the role of WHO, what is the difference between World Bank and uh, other banks. So मतलब ये सारी चीजें काफी बेसिक्स हैं। एंड this includes the prep part, and the next part is the mock PIs. So the mock PIs is just not to uh, test your knowledge base. They are also to test how you deal with the new questions, with the new situations. तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली हमेशा मॉक्स में न्यू होते हैं, बट गिवन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, द अमाउंट ऑफ कंटेंट यू हैव टू स्पीक, you would be more confident and more, I would say, spontaneous at the moment whenever the new questions are being thrown at you. So these are some of the main points for every interview. For FMS interview, I have some things to tell. The main thing is if you are having your best goal as FMS and you are having a very high percentile, then there is a very high chance. But if you are having a low percentile, then also there is a good chance because FMS wait list moves a lot. The second thing is this is the problem faced by many. There are two campus of the FMS. You have to visit the campus, which is the main campus, and the pin code is 110007. So make sure to visit that only. The third thing is the FMS panel, FMS interviews go too fast. So don't think much about the FMS interviews. Generally, they release the result within 1 or 2 days after the interview ends. So don't overthink about the interviews. They might take the 5 minute, 6 minute interviews, and it completely depends on the panel. And just don't overanalyze the things. Be very well prepared with why FMS, though it is not asked to me, but why FMS, why FMS over your other calls. Please speak about that. Some of the points you can mention is the MSA, that the Management Science Association. The second thing which you can talk about is the semester system instead of tri-semester system. So semester system gives you a lot more time to explore other non-academic areas. The third thing is you can talk about the North Campus. The campus itself is too big. So though FMS doesn't have its own campus, but the DU campus provides you a lot of opportunities and a lot of economies of scale where you can just travel from one college to another to participate in various competitions in the various other areas of the interest. The fourth point you can talk about is the location of Delhi, which helps you to build connections, to discuss your strategies, to discuss your viewpoints among the various business leaders, and most of the people live in Delhi. So that could be one of the advantage. The red flag point could be the don't speak about the fee part. Don't speak that the FMS has best ROI. Don't try to monetize the things. Even if they ask about the placement, try to uh, tell them that you
like the company, you like the work culture of the company, you would have mutual learnings, mutual benefits from the company, and don't talk about the money thing. Don't be a money minded person, at least in front of your interviews, because that's what they don't expect you. They expect someone ki jo, the one who can add the a significant amount of learnings, his experiences to the classroom, and can also gain a lot from the professor. So you have to be uh, present yourself like that. And please, the one winning point for the interviews is don't be nervous and don't be scared of the new questions. So if you are not nervous, if you are happy enough, as far as the happiness is concerned, you don't have to show with keeping a fake smile on your face, because fake smile is one of the easiest things in the world which you can recognize. And obviously the panel has been doing all this from the year. So even if the panel is feeling making you so much comfort, don't uh, try, don't fall into that trap कि आप वो आपके साथ lenient हैं, तो आप ये मत भूलो कि they are your panel, they are also judging you. बहुत लोग उसके साथ साथ थोड़े lenient हो जाते हैं, उनसे थोड़ा मतलब जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए ऑन द पॉइंट वो भी बोल पाते हैं, है ना? तो वो चीजें नहीं करनी है हमें व्हेन इट कम्स टू द रियल इंटरव्यूज. तो रियल इंटरव्यूज आर किंडर डिफरेंट. एंड यही था एफएमएस के लिए. तो बाकी आगे के इंटरव्यूज मैं अभी और पुट आउट करूंगा. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन द लिंक्डइन और द कोरा, you can type the Pallav Goyal, and I hope I will be there at the first click. So yahi hai. And if you are preparing for the CAT 2023, so you can join the WhatsApp group. We are discussing a lot of questions on the WhatsApp group, so you can join that. Thank you and have a very happy day.